Hi, this is Maushmi Mehta. Yes, ma'am. Please, yeah. Go ahead. Yeah, I have autoimmune Hashimoto type thyroid since last 7 years. So I wanted to know, do you have any such participant in your last batches who have reversed or they have managed the symptoms better? Uh, yes, ma'am, we have. But how they have managed to do it, so Swamiji will answer that. When you say autoimmune disorder, do you really know what is autoimmune disorder? Or is there a solution in wherever you have found this word from? I have spoke to my endocrino, because of whom I'm able to at least manage my dosages. So that's how I got to know that okay, it is autoimmune since I got it postpartum after delivery of my child, and then it was triggered, and the antibodies had gone haywire. So that's how I got to know from the Do you know endocrino and from the. what is autoimmune disorder? Maybe you can explain. I would like to enhance my knowledge. Why didn't you ask from your doctor when you consulted endocrinologist? Why didn't you ask him or her? Okay. I So have. first of all, managing your dosages. Oh, why everything is getting managed at this point of time? We are trying to manage our sugar level. We are trying to manage our blood pressure level. We are trying to manage our T3, T4, TSH levels or platelet levels. So why we are trying to manage it? Don't we have a solution for this? Manage तो criminal को करते हैं ना, जेल में बंद करके इतना ही रहना, यहीं पे रहना है. So the thing is, can autoimmune disorder be cured, or can it be controlled completely? Can you come out of? Can it be reversed? Yes, 100%. Your body can reverse any disorder which you find within it itself. The thing is, we are not addressing the reason behind autoimmune disorder. मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. First of all, these are just words for you. आपको समझ नहीं आता कि ये है क्या. But you think this is something. आपको लगता है कि कुछ. Unless and until you bring those words or terminologies and correlate it with your experience. अपने experience के साथ में जब तक आप relate नहीं करेंगे ना, आपको पहली बात वो समझ में नहीं आएगा. Now, what is autoimmune disorder? So there are two things which happens in your. आपके शरीर में दो चीजें. It is regeneration and degeneration. चीजें बनती हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं. Regeneration, degeneration. We call it vikriti and prakriti. What is prakriti? Regenerative force. The force which makes regeneration happen, and there is something else which makes degeneration happen. ये दोनों बहुत जरूरी है. So to give you an example, कहीं धुआं है, there is a lot of smoke at some place and you are passing by that area. वहां से आप गुजर रहे हैं, तो आप सांस कम लेते हैं या ज्यादा लेते हैं? आप नाक पे हाथ रख लेते हैं, put some handkerchief, है ना? आप सांस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कम लेती है, because the area is not conducive. तो आप जब सांस कम लेंगे ना, whenever you breathe less, your body downplays regeneration. जो regeneration होता है ना आपकी बॉडी में, वो कम होता है. Now it is a risk. ये रिस्क है आपके बॉडी. If regeneration gets down, this is a risk. So what happens? Your immune system rises up. आपका immunity थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा देता है. Whenever there is a risk in the body, your immune system goes high. Now this is a protective mechanism of your body. ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है. But tell me, have we polluted the environment? क्या environment pollute कर दिया हमने? So even if you are not putting a cloth on your nose, your body is inhaling less. We have created situation of risk across. जब भी आप chemical कोई चीज अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, is it a risk for the body or not? 100 साल पहले किसको थायराइड था? Nobody had. We have created this. हमने किया. So whenever you put in a pill, जैसे ये chemical bomb अपने अंदर डालते हैं, आपका शरीर तो बचाएगा ना अपने आप. It will increase its immunity. Yes or no? Now वो बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में ही केमिकल है. So it rises up, goes down, rises up, goes down, gets confused. Confused हो गया. इसको आप क्या बोलोगे?
इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसको समझ में नहीं आ रहा बचाना किसको है, ये तो पूरा ही खराब कर रहा है अपने आप को। इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इफ यू रिड्यूस द रिस्क इन द बॉडी, योर इम्यूनिटी विल बिकम फाइन, इट विल गेट अ सेंस। ठीक है, अब अगर रियल में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, व्हाट यू विल सी, पीपल हु गेट इनटू थायराइड, व्हाट इज अ थायराइड सिचुएशन? थायराइड सिचुएशन क्या है? आपकी बॉडी का रिदम बिगड़ गया, लय बिगड़ गया। लय बिगड़ गया तो रिस्क में आ गया। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विल बी अ कॉमन थिंग, एंड सी इन व्हाट पेस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज ग्रोइंग। इवन किड्स आर गेटिंग इनटू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है आपको, इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। थायरोइडाइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, दैट डजंट मीन एनीथिंग टू यू। You are not feeling happy, you are not feeling good within yourself, this is some experience. आपका बॉडी का वेट बढ़े जा रहा है, कम नहीं हो रहा, दिस इज एन एक्सपीरियंस। आपको भूख नहीं लग रही, हाँ कहीं पे आपके चेहरे में सूजन लग रही, दैट इज योर प्रॉब्लम। हाँ भूख नहीं लग रही, अच्छा नहीं लग रहा, दिस इज योर प्रॉब्लम। ये हो क्यों रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग? थायराइड इज ऑल्सो प्रोटीन एलर्जी। आप जितना प्रोटीन खाओगे उतना आपका बॉडी में रिस्क बढ़ेगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा ही होगा। वन ऑफ द थिंग दैट विल हैपन इमीडिएटली इज योर थायराइड प्रॉब्लम। आपको प्रोटीन से एलर्जी है, क्या आपको मालूम है इसका? आपके बॉडी का रिदम बिगड़ गया, वो जो प्रोटीन क्रिएट करने की एबिलिटी थी ना, वो बिगड़ गया। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। आप बहुत सुंदर आर्ट पेंट करते थे, आपको थायराइड हो गया, पेंट करने में मन नहीं लगता, यू कैन डू इट और यू लॉस्ट द एबिलिटी। तो आपकी गोली खाने से वो एबिलिटी आ जाएगी आपकी, आपका रिदम वापस आ जाएगा, आपके नंबर बेशक से वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे नंबर देख के, मगर प्रॉब्लम जाएगी आपकी। प्रॉब्लम तो आपकी जाए नहीं रही, आप दवाई लेते रहो और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कौन से इंसान की दवाई लेने से प्रॉब्लम ठीक हो गई है? एक एग्जांपल, गिव मी वन एग्जांपल हु डिडंट गेट इनटू क्रैश लेटर ऑन इन हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ। तो आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, आपको तो केवल एक नंबर चाहिए, और नंबर तो आपके अंदर एक T4 सिंथेटिक T4 डाल के नंबर दिखा सकते हैं, बट यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो जो आपको प्रॉब्लम जिस वजह से है उसको तो आपको ठीक करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि अगर आप वो रिस्क फैक्टर्स, अगर आप अपने बॉडी में 6 बल होते हैं, 6 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स आर देयर इन योर बॉडी, एंड देयर आर 8 लेवल्स ऑन व्हिच योर बॉडी फंक्शंस। तो अगर उनको आप करेक्ट करना शुरू करेंगे, you'll see change. The moment you start doing Kumbhak, you'll see change. More energy. Slowly you'll see your weight will come to normal. Weight आपका कम आने लग जाएगा. You'll feel more energetic. You'll feel more stable in your mind. आपके अंदर जो इमोशनल अपसर्ज हो रहा है वो कम होता जाएगा. Now this is solution. This is solution I'm talking about. If you get to these solutions, तभी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आने वाला. आप दवाई लेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको 100% गारंटीड आने ही वाला है. So do something which correct these forces, which improves your resilience to risk. रिस्क से बचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको? आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए ना. एक एग्जांपल, आई गिव यू अनदर एग्जांपल. अपने को डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी को बोलिए कि आपको धक्का दे, ट्राई टू गेट इन बैलेंस. हाउ डू यू गेट इन बैलेंस? कोशिश कीजिए देखने, हाउ डू यू गेट इन बैलेंस? You hold your breath and try to get in balance. Yes or no? If your body is not in your balance, या बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया, दिस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा अगर आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ेगा. तो आपको वो बैलेंसिंग फैक्टर जो बढ़ाना है वो कैसे बढ़ा पाएंगे? आपके ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो चुकी है, उसको बढ़ा दीजिए, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा. इट इज एज सिंपल एज दिस, बट सही जगह पे देखने की जरूरत है. So we are not saying don't take your medicine, don't do this and that. What we are saying is, because of whatever factor that you have got into disease, this disease, correct that. उसको ठीक जरूर कीजिए. ये सबकी जिम्मेदारी है. So don't fix an idea into your mind कि autoimmune disorder का मतलब वो तो ठीक नहीं होता. नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाता है. सुबह होगा, शाम को ठीक हो जाएगा. The more you get into risk, the more problem there will be, and it will show up in your diagnosis also. बट जैसे जैसे आप अपने रिस्क को कम करते जाएंगे, दिस विल सेटल डाउन, राइट. और वो कैसे करेंगे? वो इंटरनल वर्क तो आपको कुंभक के जरिए ही कर पाएंगे, और दूसरा कोई तरीका नहीं.
Just quickly, it's a 3 months course. The course fee is 7,499 for first early 21 seats. It's a one-time payment. You don't have to pay again and again. People who have issues, who are saying monthly payments, etc., please leave your number. The team will get in touch with you. Ashwini ji, जब आप payment करेंगे तो yes, you will get a certain warning, not just by Google, but many payment methods, where because you're making a payment of a certain amount, so please don't worry about it. You can go ahead and pay. Other people have also started paying. I just a sec. There was a question about can you work on grave? Can we work on grave disease as well as psoriasis? Is it possible to come out of psoriasis? See, once again, psoriasis, grave disease, these are just names. Psoriasis में आपके skin के ऊपर कुछ issue आता है. Now, there is a reason behind why psoriasis is happening. Psoriasis अगर आपके skin तक पहुंच गया, skin के ऊपर issue आ गया, so there is a reason behind it, why it is happening. If you correct the reason, उसको अगर आप ठीक कर लेते, so the problem that you are getting will get solved. What may remain is a little decoloration, है ना, जो कि आपके स्किन पे काफी समय तक रह सकता है. Even if it is there and there is no problem, your problem is solved. So if you correct the reason behind psoriasis or Graves syndrome or disease, अगर उसके पीछे का कारण अगर आप ठीक कर देते, तो because if it gets manifested on your skin पे manifest होने के बाद में उसका बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि जवान जैसा स्किन आ जाने में बहुत टाइम लग जाता है. So even if there is a patch, but there is no problem, you are okay, you are fine, isn't it? So we can correct the reason behind psoriasis को ठीक कर सकते हैं. You will not get into problem of psoriasis and later on any other problem related to that. ये तो आपको करना चाहिए, right? Even if you see a patch and there is no problem, you have become fine. तो जो कारण है उसके पीछे उसको जरूर ठीक करना चाहिए. Graves disease के पीछे जो कारण है उसको जरूर ठीक कर दीजिए. As I said, there are many factors in your body. आपके शरीर में कई सारे forces हैं और factors हैं, वो गड़बड़ हो रही हैं, उनको ठीक कर दीजिए. Your Graves disease will ease out. You will not get the symptom. आप ठीक हो जाएंगे. For example, I'll give you another example. बिल्कुल ही अलग. Suppose somebody gets into a paralysis. Paralysis में आ जाता है कोई, ठीक है. Paralysis के बाद में sensation actually go off. Suppose करो एक leg में आ गया और उसका sensation चला. Now, if the sensation comes back, sensation आ गया, and there is a little deformity of that organ. Organ का deformity थोड़ा है. You can still work, get it fine according to whatever conveniences you have in your life. उसके हिसाब से आप उसको थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं. But अगर थोड़ा बहुत deformity भी and don't have the problem of that, aren't you fine? क्या आप ठीक नहीं हो गए? So physically, if something manifests, it takes a long time to get it to the natural way of looks. But if you take care of the symptom, if you take care of the problem, the core problem, you have become fine. So ये हम कर सकते हैं. I have colitis, liver issues, and thyroid. Will I get benefited from this? Also, is there any blood test needed before starting course? And how will I know whether I'm doing it correctly or not? I might end up harming myself. So you are asking, if I dance, will I enjoy or not? Who will tell me? What is the diagnosis for that? Isn't it? आप कह रहे हो मैं enjoy करूंगा कि नहीं करूंगा? If I feel good or not, is there a diagnosis which will say कि okay, I am feeling good and I am not feeling good? Come on, have we got into that stage? क्या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां आप ये भी नहीं बता सकते कि you are feeling fine or not? What is a disease? You are feeling discomfort, isn't it? You are feeling a symptom of that disease. Only then you have a disease. Symptom नहीं है तो disease नहीं है. If you are feeling good and whatever number your body says, your body is able to handle it. है कि नहीं? TSH आपका 24 आ गया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. Do you think you have a problem? Your body is able to handle it. उसका resilience इतना है. अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आपके शरीर की इतनी शक्ति है कि उस शुगर लेवल को वो झेल पा रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको. So, what is disease? If your body shows a symptom,
अगर आपका शरीर सिम्टम दिखाता है, आपको तकलीफ होती है, दैट इज डिजीज। तो जब आप कुंभक करेंगे, कौन बताएगा कि मुझे अच्छा फील हो रहा है? आप बताएंगे। यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ, यू विल सी चेंज इन योर स्किन टेक्सचर, यू विल सी चेंज इन योर माइंडसेट। आपको अच्छा लगने लगेगा, यू विल फील हैप्पी। कौन बताएगा कि आप हेल्दी हो? योर बॉडी विल टेल यू। सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट कौन है? योर बॉडी, नथिंग एल्स। आई कैन टेल यू, सारे डायग्नोसिस गलत हो सकते हैं, आपका शरीर कभी गलत नहीं हो सकता। सारे डायग्नोसिस गलत हो सकते हैं, आपका शरीर कभी गलत नहीं हो सकता। So the moment you will start doing Kumbhak, what will you see? What will you experience within yourself? Digestion, improvement in digestion. Colitis है ना किसी का? Colitis ठीक होने लग जाएगा. If you have IBS, IBS ठीक होने लग जाएगा. Lot of गैस बनता था, कोई चीज पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, फीलिंग एसिडिक, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, भूख अच्छी लगने लग जाएगी. You will feel more energetic, you will feel more happy. Your symptoms will start reducing. कौन बताएगा ये आपको? आप बताएंगे अपने आप, आपका बॉडी बताएगा आपको, nobody else. So the proof that you will get, the first proof that you will get, it is from your body. और वो प्रूफ कभी गलत नहीं हो सकता, वो कभी गलत नहीं हो सकता. So the moment your factors of the body will start improving, your body will show up sign. आपका शरीर साइन शो करेगा, आपका फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. Isn't this a sign? ये साइन है. You will feel more control over situation. This is sign. Your constipation will slowly go off. This is sign. You will feel more energetic. आप काम करने में मन लगेगा. You will feel more happy within your mind. ये signs आपके बॉडी दिखाएंगे. So the first thing, the first sign and the confirmation will be given by your body. ये आपका शरीर दिखाएगा. इसके अलावा slowly you will also see it in your reports. धीरे धीरे करके आपके रिपोर्ट्स में भी वो आने लग जाएगा. But I would always say you cannot trust reports, you can trust your body. मैं उसके बावजूद कहूंगा कि आप अपने रिपोर्ट्स को पर इतना भरोसा नहीं कर सकते जितने अपने शरीर पे भरोसा कर सकते हैं. और आपका शरीर जैसे जैसे सही होने लग जाएगा, आपको ये सबसे पहले आपको ही पता चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो आप बाद में बताएंगे. सो योर बॉडी इज मैजिक. आपका शरीर मैजिक है, ये किसी भी बीमारी से आपको निकाल सकता है. आप इसको थोड़ा सपोर्ट करें. दिस इज एन इंटेलिजेंट स्टाफ. आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है आपका शरीर. फॉर लैक्स ऑफ इयर्स, लाखों सालों से इसने ऐसी चीजों से बचाया हुआ है. आई आस्क दिस, 100 साल पहले किसको थायराइड का इशू था? किसी को भी नहीं था. सो वी हैव क्रिएटेड, बट हु इज एबल टू, हु विल बी एबल टू गेट यू आउट ऑफ दिस? योर बॉडी. सो हम आपके बॉडी के फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो कि आपका शरीर इन प्रॉब्लम से आपको निकालेगा. और ये भी इंश्योर करेगा, दिस विल ऑल्सो इंश्योर, if your the factors of your body is proper, good and robust, it will ensure that you do not get into problem later in your life. आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए. 3 साल अगर आप कुंभक कर लेंगे, 10 साल जवान बन जाएंगे. बायोलॉजिकल एज, आई एम सेइंग, आपकी बायोलॉजिकल एज को चेक कर लीजिए, 10 साल कम हो. सो प्लीज ट्रस्ट योर बॉडी. अपने शरीर पे थोड़ा भरोसा जताएं. जो मशीनें हैं, इतना एडवांस होने के बाद भी आज तो इंसान ठीक नहीं हो रहा ना, तो आपको कम से कम अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि वी आर ट्राइंग टू टेस्ट समथिंग. स्कैन, कैट स्कैन, रैट स्कैन, दिस स्कैन, दैट स्कैन. स्कैन तो बहुत कर रहे हैं. स्कैन से कौन ठीक हुआ? मुझे एक तो बता दो. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसका ठीक हुआ? प्रॉब्लम किसकी ठीक हो रही है? थायराइडाइटिस किसका ठीक हो रहा है? सो विथ मेडिकेशन यू मे वर्सन योर सिचुएशन, लेकिन the side effects of medication you can also take care if your body is that resilient. आपकी सहन शक्ति अगर ज्यादा है, तभी आप ये केमिकल जो रोज रोज डाल रहे हैं अपने शरीर में, उससे भी बचना तभी हो पाएगा जब आपका शरीर थोड़ा मजबूत है. अदरवाइज तो वो आपको और ज्यादा हिला देगा. सो वॉट एवर यू डू, बट प्लीज डू समथिंग अबाउट द इंटेलिजेंट बॉडी, जो कि आपको इससे निकाल देगा. If you strengthen your body, if you strengthen these factors, it will take you out of any problem. If somebody is thin but does not have thyroid,
Will this course help them? थायराइड नहीं क्या है? What is? Somebody is thin, कोई पतला है, but thyroid issue नहीं है. Will this course help that person? So if somebody is thin, thyroid नहीं है. Thin का मतलब बहुत ज्यादा lean है, तब तो obviously you should do something about it. मगर thin is not a disease. ठीक है ना? पहली बात ये, yes, you want to be healthy, you want to be more resilient, more robust in your system. You have, if you want that your body is able to or should be able to handle any kind of a risk in life, yes, you must do something about it. कुछ तो करिए इसके लिए. तो आप कर सकते हैं. And if you want to gain some mass, अगर थोड़ा सा weight भी gain करना चाहते हैं, the regenerative factor is at this point of time at some risk. उसको अगर आप ठीक करेंगे तो you'll be able to gain a little mass also. लेकिन ये मत सोचे कि आप बहुत मोटे हो सकते हैं. कुंभक करने वाला कभी भी मोटा नहीं होता. मोटा अगर वेट बढ़ना भी रिस्क होता. अगर कोई भी कुंभक कर रहा है रेगुलर, he or she cannot gain weight. वेट उनका ज्यादा नहीं होगा, बट वेट विल बी अप्रोप्रिएट. बिल्कुल सही पे आएगा. ये करने के लिए अगर आप वो चाहते हैं कि आप अपने फैक्टर्स, बॉडी के फैक्टर्स, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, प्लीज डू इट. थोड़ा बहुत मास इंक्रीज हो सकता. इफ यू वांट, यू आर वेरी लीन, यू वांट सम गेन ऑफ मास, यस इट कैन हैपन, बट नहीं, वो बिल्कुल ही फुलाना नहीं है अपने आप को. तो बिकॉज कुंभक विल नॉट हेल्प यू डू दैट. दैट इज अ डिजीज. I have stemming from very beginning. Will this course help? What? Stemming from beginning, I think I'm not able to understand. Can you describe this stemming, sir, ma'am? Stammering है तो नहीं है. Please explain it or unmute yourself and ask this question. Saying yes. Stammering. So if it is stammering, so I'll tell you why stammering happens. Stammering होने का reason क्या है? So there are certain blockages in the flow of nerve impulse. नसों में जो flow होता है ना, उसमें कई लोगों के blockage होते हैं at certain part of the body. So there are people who is actually voice stops at some point of time. जिनकी आवाज भी रुक रुक के आती है, वो एकदम से बोल नहीं पाते या फिर बंद भी हो जाती. We have people who used to have a lot of problems in speaking. They started doing Kumbhak and now they can speak for us. ऐसे लोग जो थोड़ा बोलते ही रुकावट आती है, ये खांसी आती है, ऐसा भी है. There were people who would not be able to speak the full sentence. In between they'll have to stop. तो कुंभक करने से उसमें बहुत हेल्प मिलता है. If there is no disease as such, कोई प्रॉब्लम नहीं है as such, and it is just a factor of forces being blocked, कुंभक उसको भी ठीक कर सकता है. So there is a disruption of flow. जो फ्लो में गड़बड़ी है इसमें, तो फ्लो की गड़बड़ी इससे हटाई जा सकती है. तो अगर आप कुंभक करना शुरू करेंगे, you'll see this problem will come down to a large extent, but after a long period of time the problem goes in your psyche. कभी कभी वो psyche में चला जाता है. So it takes a little time to come out of that. But yes, you can come out of this. Sangeeta ji is talking about her son who suffered. He is 19 years old. He was operated when he was 16 for अगर आप unmute कर सके तो you can ask this question. Please, you can ask a question directly. I can see Mr. M.K. Saxena who has raised his hand. So you can unmute yourself and ask a question, because there are so many chat messages that are making it becomes difficult to trace a question. Hello. Yeah, बोलिए मैम. Sir, my son was operated for atelacea cardia in the when he was 16 years old, and it was said to be one in a million problems that a small child will have. And I had done a lot of research whether I can,
could avoid the surgery, because it was like a very major surgery where the whole surface was cut open and then stitched together by stimulating the muscles and everything. The voice is not. It's a condition in which a person finds it difficult. It's a rare disorder that makes it difficult for food and liquid to pass from the swallowing tube connecting the mouth and stomach into the esophagus into the stomach. Yeah. It's a very, very simple problem, not a very complex thing. But yes, medically in allopathy, because they don't have a clue of why this happens, they do an operation or whatever they think. आपको मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, नागवायु होती है आपके शरीर में. The peristaltic movement happens because of something called as nagvayu. If there is a nagvayu dosh, this will happen. If you correct that nagvayu dosh, it will become fine. ये इतना simple है. But since operation has been done, too much intervention in the process of the body creates more difficulty. But even after the operation has been done or surgery, surgical intervention कर दिया गया है, it is even more important to correct those factors of the body. So नागवायु को correct करने के लिए बहुत जरूरी है, and we give method for people, and there is a method in this program itself which corrects the नागवायु. There is Naga Kumbhak which we give to correct नागवायु. These are very simple problem at a right time. If we would have been there, हम तो थे नहीं शायद उस time पे, तो इसका तो solution बहुत simple सा था. Now it has become little more complex, and intervention in the process of the body gets into risk and creates more problem. मगर अभी जरूरी है कि उनको ऐसा कुछ करना चाहिए, so that other factors which gets disturbed due to surgical intervention, they remain robust and the problem doesn't aggravate and gets into some other thing later on in the life. तो अभी बहुत जरूरी है कि he must work upon these factors. Rajesh Patel ji is saying stop non-veg in this course. I'm assuming that is a question that will I have to stop non-veg food in this course? And Archana ji is asking, will you be giving something to eat too? Apparently somebody is being told by the doctors not to take Ayurvedic preparations because they have steroids. No, doctors will give you steroids. The Ayurvedic preparation doesn't have steroids. Maybe some quack gives you a steroid along with some herbs. अगर कोई क्वाक होगा तो आपको थोड़ा सा स्टेरॉइड देगा, बट आपका डॉक्टर आपको स्टेरॉइड जरूर देगा. आयुर्वेद में स्टेरॉइड्स का यूज नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट इट वेरी क्लियर. द सेकंड थिंग, डू नॉट गेट इनटू एन आइडिया कि हम ये बताएंगे वो बताएंगे वो. डू नॉट गेट इनटू एन आइडिया. योर थायराइड मे नॉट बी एन इशू ऑफ थायराइड. डू यू नो दिस? क्या आपको मालूम है कि आपका थायराइड का इशू नहीं हो सकता आपका लिवर का इशू. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज एन इशू ऑफ लिवर. तो आपने तो आइडिया लगा मेरा थायराइड खराब है. नो, थायराइड खराब है ही नहीं आपका. ऐसा भी हो सकता है कि आप घबराहट आपके अंदर ज्यादा होती है. So you have anxiety issues because of which your TSH has become high. TSH has nothing to do with thyroid. क्या आपको मालूम है इस बात का? So please do not create an idea by reading something over internet or whatever your doctor said. अगर डॉक्टर आपके जानते तो ठीक कर देते ना आपको. हाँ है ना, सिंपल लॉजिक, बच्चों वाली लॉजिक समझिए. अगर डॉक्टर्स को मालूम होता कि ये प्रॉब्लम क्या है तो आपको ठीक कर देते, पर आप तो ठीक हो नहीं रहे. और थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है. इज इट ग्रोइंग और डिक्रीजिंग? इट इज ग्रोइंग. इट हैज बिकम एन एपिडेमिक. सो डू नॉट क्रिएट एनी आइडिया अराउंड एनीथिंग. अपने आप को ओपन रखिए. आइडिया से आप ठीक नहीं हो रहे और ठीक होंगे भी नहीं. द नेक्स्ट थिंग इज, आगे देखिए कि क्या हम आपको अलग से कुछ देंगे. पहली बात तो हम इसमें कुछ भी अलग से नहीं देंगे. ठीक है, आपके बॉडी के फैक्टर्स को ठीक कर रहे हैं, ये जरूरी है. आपको खाना भी अगर ठीक से पचाना है, इफ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ अ लिटिल, यू शुड हैव अ लिटिल स्ट्रेंथ. यस और नो? अगर आप जीवन को एंजॉय भी करना चाहते हैं तो उसकी शक्ति तो होनी चाहिए आपके अंदर एंजॉय करने की. अगर आप भोजन को पचाना भी चाहते हैं तो यू हैव टू हैव फोर्सेस, फैक्टर्स रोबस्ट इन योर सिस्टम. कैल्शियम की कमी से कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता. ये भी आइडिया लगा रहे हैं आप. कैल्शियम खा के किसी का ऑस्टियोपोरोसिस आज तक ठीक नहीं हुआ. So your body's ability to absorb calcium has come down. है कि नहीं है? वो कैसे बढ़ाएंगे आप? वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको. So the first stage of the program is not about taking anything from outside. The first stage of the program is about correcting your body, making it more resilient, making it more robust
3 चीजें आपके शरीर की ठीक करनी है, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम। ये ठीक करना, आपकी लाइफ तभी सुधरेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, करेक्टिंग योर बॉडी। देयर इज अ सेकंड स्टेज, इफ यू कम टू दिस प्रोग्राम, देयर विल बी पीपल हु वुड वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, उनको चाहिए कुछ कि सपोर्ट बाहर से दे दो, दैट स्टेज विल सी। मगर वो पहला तो स्टेज आप कंप्लीट कीजिए, देयर विल बी अ चॉइस कि आप सेकंड स्टेज में आना चाहते हैं कि नहीं चाहते। पहले स्टेज में ठीक हो गए, क्या प्रॉब्लम है आगे जाने की? तो पहला स्टेज आप पहले पूरा कीजिए, एंड इट इज अबाउट योर बॉडी, नथिंग एल्स। Once again, quickly, it's a 3 months program. Fees 7,499. Main classes, 3 main classes will be held on Sunday 5 p.m. Practice sessions are held once in a week as per a predetermined schedule at 7 a.m. and 7:30 p.m. There were some people who were raising their hands. So if you still have a question, you can ask. Otherwise, we'll close the webinar. Rajesh Shai ji, what is that you wanted to speak about? I see 4 messages. I am a beneficiary already of Kumbhak practice. Are you getting me? Am I audible, sir? Yes. Yes, you are audible. From insulin down to non-diabetic, I am now. Already. Okay. Already. I have only one question. Internal Kumbhak, internal retention does what we have heard and have experienced. Only one thing I want to, when the breath is outside and retained, how it works. Only this thing I want. See, you are asking a completely different subject, but still I'll answer. Pehli baat to internal Kumbhak is about your body, is about your control over things. External Kumbhak is not about your control over things. It is about somebody else's control over things. So external Kumbhak, there are 2 factors which control a life. On one side, it is you. On the other side, there is a second option. There is something else. I don't want to go into terminology. Most shabd nahi bolna chahta, nahi to otherwise it will become esoteric and it will become kind of a spiritual thing. So the external factor is controlled by something else. You have a little control over your bodily functions. That happens through internal Kumbhak. Now, what controls the whole universe? It is something else, the other factor which controls the whole universe. So the moment you want that, now you have lived your life, now you want to actually become free of this clutch of life. So even life is a foundation, isn't it? You work under a certain boundary. So if you want to come out of this foundation, then only very, very cautiously. Why I'm saying cautiously? Because unless and until you have control over your faculties, if you give your control to something else, you'll get into more risk. अगर आपका बैलेंस नहीं है और आप किसी ऐसे नाव पे चढ़ जाते हैं जो बहुत ज्यादा हिल रही है, तो आप अपने आप को और पकड़ लेंगे. Your spiritual possibility will come down. So it is very, very cautiously, the external is given after a certain period और कुछ आपके evolution के बाद में वो दिया जाता है. तो वो हम भी वो अभी नहीं देते. We talk about it a little in our other program पूर्णमासी में थोड़ा हम उस dimension की तरफ में जाते हैं, मगर not really in our programs, because people are struggling with their life. They don't have control over their life. If you don't have control over your life and talk about coming out of life, talk about mukti, samadhi, तो फिर वो ठीक नहीं है. It will not work also. So Bahya Kumbhak, where you are leaving your control over things, you want to go towards mukti, तब उस समय उसको ओपन किया जा सकता है. But it's a very, very risky thing, और it is always done in सानिध्य, गुरु सानिध्य में ही करते हैं. So we understand that this program is only about meditation.
No diet, no exercise, and is it box breathing? Breathing, yes. Obviously, breathing, yes, but not the way the breathing has been promoted by the yoga faculties or yoga people. ठीक है ना, योगा लोगों ने प्राणायाम को बहुत प्रमोट किया and it is related to breath. So everything related to breath gets associated with प्राणायाम. नहीं नहीं नहीं, आप रोज ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या आप रोज प्राणायाम नहीं कर रहे? Yes, प्राणायाम is not just about breathing. Pranayam is about controlling your energies and you do it by eating food also. प्राणायाम क्या भोजन खा रहे हैं तो प्राणायाम नहीं कर रहे? तब भी कर रहे हैं. So pranayam is from a yoga lineage and the direction is towards samadhi. तो सबको तो समाधि नहीं चाहिए, हमें तो हेल्थ चाहिए ना. So we are using Kumbhak, which is an internal facility or faculty of your body. आपके शरीर का ये strength creating mechanism है. इसी को मुक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसी को वेट उठाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको खुश होने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको काम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको हेल्थ क्रिएट कर, आपको लिवर को पावरफुल बनाने के लिए भी कर सकते हैं, आपके थायराइड को ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं. So we are not doing pranayama in the sense that pranayama handles breath. वो तो आपको मुक्ति की तरफ में ले जाएगा ना, हम वो नहीं करें. That is why we categorically say योगा नहीं है ये, this is not yoga, क्योंकि इससे आपको समाधि मुक्ति नहीं मिलने वाली, और वो आपको चाहिए तो आप योगा करो ना, हम मना नहीं कर रहे, बट हम कह रहे हैं कि we are using it for health, we are using it for coming out of a particular disease. आपका कंट्रोल कुछ खत्म हो गया लाइफ में, उसको वापस गेन करने के लिए कर रहे हैं. If you want to live well, do Kumbhak. If you want to go out of life, do yoga. समाधि मुक्ति चाहिए, आप योगा करो ना, बट डू इट विद अ गुरु, गुरु के साथ में कीजिए. आपको हेल्थ चाहिए तो आप कुंभक करो. तो is it about breath? Yes, it is about breath, but it is about lot more things. और भी चीजों. Is it meditation? Not at all. क्या ये मेडिटेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Will you become more focused with this? Yes, 100% guaranteed. आप मेडिटेशन से फोकस आपका बढ़े नहीं बढ़े, आपका कुंभक से बढ़ेगा, 100% guaranteed. Will you be able to handle your mind through Kumbhak? 100%. Will you be able to handle your mind through meditation? We can't guarantee that. But you will be able to handle your mind through Kumbhak. That is guaranteed. ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके मेंटल इश्यूज सारे के सारे चले जाए. So is it meditation? No, not at all. This is not meditation. Kumbhak is effort making faculty of human life. जीवन, मानव जीवन में एफर्ट कहीं से भी बनता है तो कुंभक से ही बनता है. So even if you speak, it is through Kumbhak that you are able to speak. Even if you are able to see, it is through Kumbhak that you are able to see. तो वो एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, फैकल्टी जो ह्यूमन लाइफ की है, उस पे काम कर रहा है. One last question, Manisha ji, you raised your hand. You also shared your number, I believe. So, do you have a question or? Okay. I think we'll close the webinar now. Will it improve vision of eyes? Okay, somebody's asking, two people, both are wearing glasses. I'm glad the question is not about will it help hair growth, because one has hair, the other one does not. It will certainly help you in hair growth, and it will certainly help you in improving the vision. If you are not, if you do not have an accidental eye. So, मेरा तो आँख accident में गया. So this glasses is just to correct the IOL, intraocular lens लगा, उसके ऊपर से correction है. That's it. So will it improve vision? Yes, it will improve. If you have glaucoma, we have people who have come out of glaucoma, who have come out of vision issues. उनके number भी कम हुए, ऐसे भी है. So will it help improve your eye health? Certainly, 100% yes. Unless until you have an accidental eye. But see, आप ये भी देख लीजिए कि the deterioration process will get arrested through Kumbhak. ये आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका डिटीरियोरेशन रुक जाएगा. Is it a small achievement? It's a big achievement.
आप बताइए और किस तरीके से आप डिटेरियोरेशन रोक सकते हैं, और किसी कोई दवाई खा के रोक सकते हैं? हेल्दी फूड विल हेल्प बट नॉट स्टॉप योर डिटेरियोरेशन। डीजनरेशन को कौन रोक सकता? डीजनरेशन को कुंभक रोक सकता है। तो डीजनरेशन को 100% हम रोक देंगे। कितना आपको फायदा होगा दैट डिपेंड्स, बट यस आप प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे, इट्स अ बिग थिंग। आप लाइफ जिए, अच्छे से जिए, डू नॉट गेट इनटू क्रैश, डू नॉट डाई ऑन हॉस्पिटल बेड। इज दिस अ स्मॉल अचीवमेंट? दिस इज अ बिग अचीवमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैव डिस्ट्रॉयड लाइफ सस्टेनिंग फैक्टर्स ऑफ दिस अर्थ। पृथ्वी पे जीवन बनाने के जो फैक्टर्स हो तो बर्बाद कर दिया हमने। ऐसे में अगर आप हेल्दी अपनी लाइफ जी सके पूरा का पूरा, इज दैट अ स्मॉल अचीवमेंट? नेवर। क्या एक्सरसाइज करके अचीव कर पाएंगे आप? नहीं तो शेन वॉर्न क्यों चला जाता 50 साल में? जितना लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं देखो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सो एक्सरसाइज करने के लिए भी आपके ऑर्गन्स में इतना इतना तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, अदरवाइज दे विल कोलैप्स। आप एक्सरसाइज ज्यादा कर दोगे, आपका हार्ट का स्ट्रेंथ इतना नहीं है तो इट विल कोलैप्स। सो कैन यू इंप्रूव, शुड यू इंप्रूव योर हार्ट स्ट्रेंथ? इस वक्त में तो इमरजेंसी में चाहिए ये, isn't it? So that we can guarantee कि आपको क्रैश नहीं आएंगे लाइफ में, आप हेल्दी लाइफ जियोगे। हाँ अच्छा ठीक है, 1.5 2.5 आपका नंबर था, अगर नीचे नहीं हुआ, आंखें खराब नहीं हुई, और ज्यादा नहीं, डीजनरेशन रुक गया आपकी आंखों का, और बेटर हो गया थोड़ा। सो इज दिस अ स्मॉल अचीवमेंट? इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड एवरीबडी शुड डू इट। हर एक को ये जिम्मेदारी जरूर अपनी निभानी चाहिए।